आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँ जो क्लास 8 बायोलॉजी चैप्टर नंबर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स की वीडियो है। जस्ट लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड एनर्जी फ्रॉम फूड। एनिमल्स और प्लांट्स को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें, और फूड की ज़रूरत होती है। ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो होते हैं वो फूड को प्रिपेयर कैसे करते हैं? फोटोसिंथेसिस से। Photosynthesis means to prepare the food in the presence of sunlight, and photosynthesis means to put them together. Photo means light, synthesis means to put them together. In this process, oxygen is released into atmosphere and glucose is transferred to the different parts of the plants and is used to carry out different activities. The extra glucose is changed into future into starch. Starch is a sugar. In everyday transport mean that we carry thing from one place to another. But in biology it is a life process in which material is absorbed in one part of the body and carried to the different parts of in its body. Before we learn the transportation system in plants, we know the definition of term. What is definition of tissue? A tissue is a group of similar cells which work together to perform a particular function. Tissue group of cell है जो एक particular function को perform करने में मदद करता है. What is then vascular tissue? Those tissue which transfer water, minerals and foods. Those tissue which transfer water, minerals and food to the different parts of the plants are called vascular tissue. Vascular tissue होते हैं जो फूड को, वाटर को और मिनरल्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो वस्कुलर टिश्यू कहलाते हैं. ये 2 टाइप्स को होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. द टिश्यू विच कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स थ्रू द लीव्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम. जो टिश्यू वाटर और मिनरल्स को कैरी करते हैं रूट से लीफ तक, वो जाइलम कहलाते हैं. दूस टिश्यू विच कैरीज फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड फ्लोएम. जो टिश्यू कैरी करते हैं फूड को लीव से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड फ्लोएम. All the parts of the plants like roots, stems, branches and leaves contain vascular tissue called xylem and phloem. The xylem and phloem tissue are a kind of tubes tubular cells arranged end to end. ये एक kind of tubes है जो कि tabular cells में होती है, जो end तक होती है, एंड टू एंड. द जाइलम टिश्यू इज अ डेथ. जाइलम टिश्यू जो होते हैं वो डेथ जाइलम सेल से बने हुए होते हैं, जहाँ की फ्लोएम जो होते हैं वो लिविंग फ्लोएम सेल से बने हुए होते हैं. देन एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. सिंस वाटर एंड मिनरल्स मेनली अवेलेबल इन सॉइल्स, हमने ज़्यादातर वाटर और मिनरल्स अवेलेबल होते हैं सॉइल्स में. एज टू डेवलप द रूट सिस्टम इन प्लांट्स इन to absorb roots. Roots are covered by the single cell layer. Roots जो होती है वो सिंगल सेल लेयर से कवर होती हैं, जो कि कहलाती हैं epidermis. The epidermal cells have fingers like tubular outgrowth known as root hairs. Root hairs are these. These are root hairs. The epidermal cells have finger like tubular outgrowth called as root hair that increase the surface area for the absorption. As the number of root increase, the plant's absorption of water also increase. Then as the plant grow, the roots, branches and branches get fixed in soil. जब plant grow होता है तो उनकी जो roots होती हैं वो soil में fix हो जाती है. At the tip of roots, a large number of cells absorb water and nutrition from the soil. These cells have a semi-permeable plasma membranes. Plasma membranes has tiny pores that allow only selected minerals and water molecules to pass through it by the process of osmosis. Osmosis is a process the molecules of solvent water move from a region of the higher concentration to the lower concentration through the semi permeable membranes. Osmosis एक प्रोसेस है जिसमें मोलिक्यूल्स होते हैं सॉल्वेंट के, वाटर के, जो कि हाइगर
कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, किसके द्वारा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के द्वारा. देन व्हाट इज absorption of minerals? Next heading is absorption of minerals. Calcium, potassium, manganese and nitrogen are a few minerals required by the plants. They are dissolved in water in the soil. The minerals absorption in plant take place by the means of two process, diffusion and active transport. Diffusion involves the movement of salt molecules from a region of higher concentration to a lesser region of lower concentration. In diffusion, it involves the movement of salt molecules from a higher concentration to the lower concentration. In diffusion, you can see the diagram of the diffusion. Here is soil particles, here is minerals, and here is root hair. Then in case the concentration of minerals molecules is low, in this case the concentration of molecules is very low as compared to the root hairs. Then active transport is a movement of minerals ions from a region of the lower concentration to the higher concentration. In this process, the molecules is moving from the lower concentration to the higher concentration. You can see by the help of diagram. Movement of ions from soil to roots. Example, from the higher lower concentration to the region of higher concentration. See. Then let's do test your understanding at the fill in the blanks. Root hair increase the surface area for the absorption of water. The process of preparation of food by the plants in the presence of light is called photosynthesis. Osmosis is a process which occurs for molecules from a region of higher concentration to its lower concentration through a semi-permeable membranes. Active transport plays against the concentration gradients across the semi-permeable membranes. In part 2, we will learn the transportation in plants, structure of xylem functions, and phloem functions and structure of phloem. Thank you friends. Bye. Take care.